Ji, good morning. This is Farhan Shakil from the Republic 2.0, and today's things that we're gonna do is the Cambridge IG CSC paper 24 October November का ये variant number 1 है. So that is what we're gonna start. Question number 1 से start करेंगे. 1 hour इस paper का time होता है, so we'll try to complete it within that time. Okay. So question number 1. Jacob is 10 years, 8 months old. Emmy is 15 months younger than Jacob. ठीक है. So Emmy is 15 months younger than Jacob. What does that mean? 15 months का मतलब क्या है? First of all, 15 months 15 months का मतलब है 1 year and 3 months. तो आप रिस्पेक्टिवली इसको इसमें से माइनस करेंगे, राइट, बिकॉज ही इज यंगर. सो यू कैन सी दैट 10 years and 8 months. So we have got 1 year and 3 months. अगर आप इनको माइनस करते हैं, you need to keep that thing in mind that 10 years should be subtracted from years. We've got 9 years and 5 months. So 9 years and 5 months. Similarly, we've got question number 2, 6.7 kilometers. Kilo is a prefix, which is 1000. So if you want to convert 6.7 kilometers into meters, you just need to times 6.7 by 1000 and you'll get 6700 as the final answer. Question number 3 is the angle that you need to measure with the help of a a protector. आप इसे manually measure करेंगे. So this is something less than 90, which I could easily see. तो इसका आंसर somewhere around, अगर आप इसको protector से measure करेंगे, so you'll be accurate. But if I could just look at it from here, it is something in between 80 to 85. So I'll just keep 85 for it, right? So this angle, if you guys gonna measure this angle with the help of a protector, this has to be 85 degrees. Now, mathematical name, yaad rakhein, any angle less than 90 degrees is basically an acute angle. So this is an acute angle. Then a concert starts at 1950 and finishes 2 hours 42 minutes later. So you have got 1950 और वो खत्म होता है after 2 and 42 minutes, right? So that is going to be 50 plus 42, 60 से above हो जाएगा. 60 का एक कैरी ले लें इधर, and then up after 60 you have got 32 minutes. और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19 plus 2 is 21 and 21 plus 1 has to be 22. So 22 and 32, that is the time. 22 यानी तकरीबन 22 hours 32 minutes पर आपका कॉन्सर्ट जो है वो फिनिश होगा. Now we need to talk about these inequalities. So first of all, we've got 2 by 7. अगर आप 2 by 7 की बात करते हैं तो that is something like, if you just solve it down, 7 times 2 is 0.2, 14, 6 आ जाएगा. And then 7 times 8 is basically 54. You'll be left out with 6. And then again a 0. फिर 7 times 8. And then फिर 7 times 8 आ जाएगा आपके पास. So what does that mean? That this term has to be less than 0.2861. ठीक है जी बात. Now 99 upon 900. So this is something like 11 upon 100. So it is 11 percentage. Equal to होगा 1 का cube और 4 to the power of 0 would always be equal. तो इनको आप equal to का sign use कर लें, right? So that is how we're going to talk about these things. स्टेम एंड लीफ डायग्राम है. स्टेम एंड लीफ डायग्राम में आपने रेंज निकालनी है. तो आप हाईएस्ट नंबर देख लें, विच इज गोइंग टू बी 54, and the lowest number is going to be 10. So 54 minus 10 has to be something like 44 is the range. इस रेंज के बाद आपने मॉड निकालना है. मॉड में आप देखें जो सबसे ज़्यादा वैल्यू रिपीट हो रही है, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आपके पास रिपीट हो रही है, दैट हैज़ टू बी समथिंग लाइक, अगर आप देखें ये 27 3 दफ़ा आ रहा है, एंड देन यू हैव गॉट 3, विल नो ओनली दिस 27, 27 and 27, they are getting repeated. So mod is 27. Now we need to find the reciprocal of 1 by 4. So first of all, write it as a proper fraction. 4 times 1 is 4, 4 plus 5, 4 plus 1 is 5. It would become 5 by 4. इसका रेसिप्रोकल निकालने का मतलब है, you need to reciprocate them. आपको डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना है, न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना है. So that would eventually become 4 by 5. So that is the reciprocal of this thing. Now you have got this question number 8, quadrilateral है. तो quadrilateral में पहली बात तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, because both of these angles 138 and this angle are at the point. इनका सम क्या होगा, 360. So I'm supposing this angle to be
जो मैंने फाइंड आउट करना है प्लस 138, इट हैज़ टू बी 360. सो इफ यू वांट टू गेट दिस ब्लू एंगल, आपके पास क्या होगा, 360 माइनस 138. एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट 360 फ्रॉम 138, इट हैज़ टू बी 222. सो आपके पास ये वाला एंगल क्या है, दिस इज 2 2 एंड 2. नाउ रिमेंबर द थ्योरम कि क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स होंगे और चारों का जो सम है इट हैज टू बी 360 डिग्रीज. सो 49 प्लस 222 प्लस y प्लस द फोर्थ एंगल इज 28. इन चारों का sum has to be 360 degrees, right? So when you're going to add them up, y plus, now if you're going to add 49 plus 222 plus 28, that's going to give you 299 equals to 360. So y is equals to 360 minus 299, and your answer going to be 61 degrees, right? So that is how we're going to calculate y. क्वेश्चन नंबर 9 देखें जी. इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल अमाउंट उसकी ये है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 2.6% एंड टाइम इज 3 years. टोटल इंटरेस्ट आपने निकालना है. तो टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, PRT, राइट? PRT. सो यू गॉट, अब आपके पास देख लें, आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट इज $3,000, द रेट इज 2.6%, परसेंट का मतलब 1/100, टाइम इज 3 years, राइट? नाउ इफ यू गोना जस्ट सिंपली मल्टीप्लाई देम अप, अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आता है, दैट इज समथिंग लाइक, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने से आपके पास आंसर आता है, दैट हैज टू बी 23400 डिवाइडेड बाय 100, एंड दैट हैज टू बी 234. So 234 is your interest that you have calculated on this things. Now you have got this question number 10. There are the first four terms of the sequence. Write the next term in the sequence. आपको order देखना होता है. 10 plus 16, 10 plus 6 is 16. 16 plus 6 is 22. 22 plus 6 is 28. तो जाहिर सी बात है कि 6 का पैटर्न बन रहा है, राइट? सो आपकी जो नेक्स्ट टर्म होगी, दैट हैज टू बी 28 plus 6, विच इज 34 एज वेल, राइट? इसी का अगर आप बी पार्ट देखें तो टर्म रूल क्या है कि जी मल्टीप्लाई बाय 3 एंड सब्ट्रैक्ट 1. द फोर्थ टर्म इन द सीक्वेंस इज 68. व्हाट डज दैट मीन जी? इसका मतलब है कि जी अगर आप एक टर्म को मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल दैट टर्म इज थर्ड टर्म, मल्टीप्लाई करें 3 से और सब्ट्रैक्ट करें उसमें 1, तो यू विल बी हैविंग द नेक्स्ट टर्म. और नेक्स्ट टर्म अगर मैं 3 टर्म की बात करूं तो नेक्स्ट टर्म फोर्थ टर्म मुझे दी हुई है, दैट इज 68. So 3a3 equals to 69. One, by adding 1 on both the sides, I would be having a3 is equals to 20. क्या बन जाएगा ये 23, right? So third term has to be 23. We were looking for the third term. नेक्स्ट बात करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील इज 198.55. डायमीटर ऑफ द व्हील आपने निकालने. सो इफ यू रिमेंबर, circumference is 198.55, right? And if you remember the formula for the circumference, that was pi d. अगर आप diameter के in terms बात करते हैं तो it has to be pi d. So formula लिखें, pi d is equals to 198.55. The diameter would be 198.55 divided by 3.14. और अगर आप इनको डिवाइड कर लेते हैं, so your answer is going to be you know समथिंग लाइक, सेंटीमीटर्स में आपने मिलीमीटर में बात करनी है, डायमीटर आपके पास आ जाएगा समथिंग लाइक 63.2. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मिलीमीटर्स, जस्ट टाइम्स इट बाय 10 and you will have 632 millimeters, right? So that is how you'll get your final answer. अच्छा जी, अब इसमें आपने, if you look into this diagram, you need to, the grid shows half of the shape which has a line of symmetry L. Complete the shape. आपने शेप कंप्लीट करनी है, रिफ्लेक्शन करवानी है, राइट? तो आपको थोड़ी सी चीजें चेंजिंग यहाँ पे करनी होंगी, ऑपोजिट शेप बनानी होगी इधर. तो ये वाला पार्ट आपके पास ऊपर की तरफ आ जाएगा. इट इज कवरिंग 3 boxes, so it has to cover something like these 3 boxes. Then you can see that this tilted line is covering up almost three boxes, right? this it is covering up almost 3 boxes like this. तो आप ऐसे कर लें इसको, 1 2 and 3 ऑलमोस्ट, ठीक है? और इसके बाद अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, यू जस्ट नीड टू प्लग दिस लाइन ओवर हियर. सो दिस इज हाउ वी गोना ड्रॉ द सिमेट्रिकल शेप, ठीक है?
ये वाली साइड इधर आ जाया करती है, ये वाली साइड इधर आ जाया करती है. You just need to reverse their patterns. Find the values of 6c plus 7d when c is 3 and d is negative 4. So just plug in the values 6 times 3 plus 7 times negative 4, and you'll be having 18 minus 28, which is negative 10. Similarly, if you've got the b part, you're just going to solve them down. So bring the terms containing x together. 8 minus 4 equals to 11x minus 6x, and that would become 5x equals to 4, and x has to be 4 by 5. So that is how we'll get ourselves the final answers. इसी तरीके से if you look into it, 34 as a percentage of 80. Percentage का मतलब है that we need to divide the term by the total term, जिसमें से आपने percentage निकालनी है, times it by 100, and you'll get something. So 34 upon 80 times 100 is something like 4.2, नहीं 42.5. इसी तरीके से आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 है. वी नीड टू कैलकुलेट द मीन. मीन का फॉर्मूला क्या होता है जी? समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ. नाउ समेशन एफ एक्स क्या होता है? दिस इज द एक्स. यू नीड टू मल्टीप्लाई दीज एक्स विद एफ. 0 टाइम्स 1, 0 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 6 प्लस 2 टाइम्स 7 प्लस 3 टाइम्स 4 प्लस 4 टाइम्स 5 प्लस 5 times 2 divided by the sum of the frequencies, which are 1 plus 6 plus 7 plus 4 plus 5 plus 2. So we're just going to simplify them up now. So 0 times 1 is 0, 0 plus 6 plus 14 plus 12 and plus 20 plus 10 divided by 1 plus 6 is 7, 7 plus 7 is 14, 14 plus 4 is 18, 18 plus 5 is 23, 23 plus 2 is 25. Now, if you're going to add them up, 6 plus 14 is 20, 20 plus 20 is 40, 40 plus 10 is 50, 50 plus 12 is 62 divided by 25. And when you're going to divide them up, you'll be having your final answer as 2.48, right? So that is your mean. So, you'll be writing over here 2.48. Okay, ji. Now we've got the trapezium. आपने इसकी एक side निकालनी है W, and you've got the area. So you're just going to use the formula 1 upon 2. Opposite sides को add करते हैं, times it by the height, which is 8. Keep it equal to the area, which is 78. So now it is going to be 2 times 1 and 2 times 4. So it should be 4W plus 48 equals to 78. ये 4 इन दोनों नंबर से multiply होगा. And you would be having 4W equals to 30. And W is equals to 30 divided by 4, which is something around 7.5. ठीक है जी बात. Then after this question, a distance d meters measures 34.6 correct to the nearest. Statement about the d. आपने उसका lower bound और upper bound निकालना है. तो लोअर और अपर बाउंड के लिए नियरेस्ट के बाद वाला नंबर देखते हैं, दैट इज 0.1. अगर आप इसको हाफ करते हैं तो दैट इज गोइंग टू बी 0.05. Just take away 0.05 from 34.6 for the lower bound and add 0.05 into 34.6 to get the upper bound. So you'll be having 34.6 minus 0.05 less than equal to d less than equal to 34.6 plus 0.05, and then you get the upper bound. So that is going to be 34.55 less than or equal to d less than 34.65. So these are the lower and upper bounds, 34.55 and 34.65. That is how you'll get the upper and lower bounds. अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 18 है. The diagram shows a rectangle and 2 points P and C on a 1 centimeter square grid, right? अब अगर आप इस ग्रिड को देखें, so you've got this grid. अब इसके बाद एक चीज, state the coordinates of C. तो पहले तो आप coordinates of C देख लें. There is no x, only y, so it has to be 0 and 5, right? Everybody knows that. उसके बाद rectangle is enlarged by a scale factor of 2 with center of enlargement at C. Find the coordinates of the image of the point P. अब आप पहले देखें, स्केल फैक्टर 2 है और P के जो अभी के कोऑर्डिनेट्स हैं, इट हैज टू बी 7 एंड 8. और C के कोऑर्डिनेट्स क्या है? C इज द सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट. इट हैज 0 एंड 5. इट हैज नो x कोऑर्डिनेट, राइट? तो x कोऑर्डिनेट अगर उसके पास कोई नहीं है तो अल्टीमेटली सिर्फ आप x कोऑर्डिनेट को क्या करेंगे? जस्ट गोना टाइम्स इट बाय 2, व्हिच इज 14 minus 0.
राइट. सेंटर ऑफ आपके पास स्केल फैक्टर 2 का है ना, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 माइनस 0 द center of enlargement. Then times the 2 by times this 8 by 2 as well, because the scale factor is 16. So that would become 16 minus the center, and that is 5. So you would be having 14 and 11 as the new coordinates of P, 14 and 11. Area of the enlarged rectangle. How would you get the area of the enlarged rectangle? First of all, get yourself the area of the original shape. And that would become, अगर आप देखें तो इसकी जो height है, that is 3, and the width of this thingy is something like 1 2 3 4 5 5. तो इसका जो original area है, that would be 5 by times 3, and that is 15, right? अब scale factor 2 का था. अगर scale factor 2 का है, तो what does that mean? That even the width and the length both would increase by 2, right? So you need to times it by the square of 2, and you'll be having 15 times 4, which is 60 centimeters square. I hope you got that. Next, अगर आप बात करें question number 19, तो जो ask some people if they own a car and if they own a motorbike. 36 people own a car, 39 people own a motorbike, अब 86 people own a car, और अभी 74 है. इसका मतलब है कॉमन पार्ट में क्या होगा? 12, जो बाकी के बचते हैं, 86 माइनस 74, 12 हो जाएगा इधर. 39 people own a motorbike. अब 39 में ये कॉमन पार्ट भी आ गया, so you need to subtract this 12 from the 39 to write it in the isolated motorbike section. So 39 minus 12 has to be something like 27. And then 7 people do not own a car and do not even own a bike. So 7 people आपके पास out of these cells आ जाएंगे. Find the total number of people that Joe asked. तो जो total number of people है जो कि Joe की बात कर रहे हैं. So how would you get this total number of people? Just 7 plus 74 plus 12 plus 27. You're going to add them up and you'll get the final answer. Common section में कितने numbers आ रहे हैं? Which are 12, right? Common section में आपके पास 12 numbers हैं. Now, Josh buys a car. Josh एक car buy करता है, and he's buying a car for $7,800 and sells it for 5265. Calculate the percentage loss. आपने percentage loss निकालना है. How you would be able to calculate the percentage loss? आप सिर्फ इनको माइनस करें. You've got 7,800 minus 5265, and then you just need to divide it by the cost. ठीक है, तो वो क्या बनता है? 7,800 times it by 100. So अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, so you will be having 7,800 minus 5265, 5265, and you'll be having 2535. 2535 divided by 7,800, 2535 divided by 7,800, and then you're going to multiply it by 100. So you'll be having 32.5 as the final answer. ठीक है जी. तो परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला ये होता है, लॉस डिवाइडेड बाय जिस पे वो उसने अपना बाय की है और मल्टीप्लाइड बाय 100. ओके जी. फैक्टराइज का मतलब होता है यू नीड टू टेक समथिंग एज कॉमन. इफ यू लुक इनटू 28x and 35, there is only one common, and that is x. So first of all, I just told you guys that you're going to multiply the second equation by 3. So you would be having 3 times 3x is going to be 9x minus 6y equals to 3 times negative 17 has to be something like minus 150, 51. Just add it into the first equation, adding into 1, and you would be having 9x minus 6y equals to negative 51, and then 5x plus 6y equals to 9. So ये और ये cancel out हो जाएंगे, and this would become 14x, and minus 51 plus 9 has to be something like 42, minus 42, and x would be negative 3. Plug that value of x in any one of these equations. I'm going to use the first one. So 5 times negative 3 plus 6y equals to 9. Negative 15 plus 6y equals to 9. 6y equals to 9 plus 15, and you'll be having 24, and y would be equal to 4. So these are the two values of x and y you were looking for. Without using the calculator workout, so 5 1 by 3 इसको proper fraction में लिखें, and that has to be 15. 15 plus 1 is 16 divided by 3.
minus 7 threes are 21, 21 plus 4 has become 25 upon 7. And now you would be having their LCM, yeah, cross multiply, kuch bhi kar lein, that has to be 21, right? 3 sevens are 21, 7 16s are 2 or 4 carry 11, minus 7 threes are 21, and 3 25s are 75. And when you're going to subtract them up, agar aap dekhein isko, so you'll be having 112 minus 75. So that would be 37 divided by 21. 37 divided by 21. And you can write it as per you like, आप इसे लिख सकते हैं 16 बच जाएगा 16 upon 21. Got it, जी? Now, x plus 132 and x, right? This is a polygon. The interior angle of the polygon is 130 larger than the exterior angle. Number of sides आपने निकालनी है. So first of all, get yourself the interior angle. तो क्या करेंगे? X plus 132 plus x. It has to be 180, right? So 2x would be equal to 180 minus 132. So 2x becomes equals to 8, 8 or 48. So x would be something like 24. That is the value of x, right? X equals to 24. So जो interior angle है वो आपके पास क्या बन गया? 24 plus 132. तो जो आपके पास each interior angle है, that would be 24 plus 132. And 24 plus 132 क्या होता है? 24 plus 132 has to be 156. अब इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है जी n minus 2 each interior angle का, not sum. 180 divided by n. So you're just going to times them up. 180n minus 360 equals to 156n. Now 180n minus 156n equals to 360. और अगर आप इसको माइनस करें 180 में से, so you'll be having 24n equals to 360. And at the end of the day, your n is going to be 360 divided by, अगर आप डिवाइड कर दें इसको, 360 divided by 24 and you'll be having 15. तो जी 15 नंबर ऑफ साइड्स हैं आपके पास इस पूरी शेप में. ओके जी, so that was paper 1. I'll get back to you guys with paper 2. Thank you very much.